हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन का एक प्रॉब्लम यूज करेंगे एंड फिर उसको जनरलाइज करके हम एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन करने का कोशिश करेंगे। ठीक, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आई रिक्वेस्ट टू वॉच टिल द एंड सो दैट आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टराइजेशन में एक इंटरेस्टिंग समझ आएगा कि क्या हो रहा है फैक्टराइजेशन में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ठीक, so let us see. I'll pick a small problem which is familiar to everyone, that is x square minus 1. So अगर ऐसा क्वेश्चन है और फैक्टराइजेशन हमको कोई पूछता है फैक्टराइज दिस, so the first thing which comes to our mind is a square minus b square formula, isn't it? तो ये फॉर्मूला क्या होता है? a plus b and is a minus b, a plus b and a minus b. So later on if इसको यूज करें यहाँ पे, so I can write x square and 1 can be written as 1 square, then x plus 1 and is x minus 1. So ये दो हम लिख सकते because we have this formula. Now if I if I increase the power like x cube minus 1, then also we have one formula, that is a cube minus b cube, and that is a plus b, sorry, a minus b and a square plus ab b square. ठीक है, so we can use up here and we can calculate this as well. So एक बार calculate कर लेते हैं और देखते हैं कि factorization में क्या दिख रहा है. So this, and this can be written as, see I'm writing 1 square, again 1 को 1 cube, so why I can write anything in the power of 1? So because anything to the power 1 means 1 का power में anything we can write and the result is always 1, because if you multiply 100 times, 1000 times, 50 times, so every moment you're going to get 1 only, और कुछ नहीं मिलने वाला है. ठीक है, so after this we will use this formula. We get x minus 1 and then x square plus x plus 1, because b square is there, b square matlab 1 square, that is 1. So we have these two. Now the question is, if I increase the power, if I write it like x 4 minus 1, so then there is a problem. So still we can sort out with some formula, like again we can write this and this, and again we can write this, because a square minus b square again हमको दिख रहा है, so I can write a square plus 1 and sorry, a plus b and a minus b, that is a plus b and a minus b. ठीक है, and further we can again factorize this second bracket, this one, ये bracket को एक और बार हम factorize कर सकते हैं, so we get x plus 1 and x minus 1. So we have 3 factors over here for this problem. ठीक है, थोड़ा सा different way का है but हो गया. Now my question is, if I increase the power little bit more, like x to the power 5 minus 1, then there is a problem. We don't have any formula to factorize this. So then we can make some identity, we can use some logical sense, and we can look the previous problems, how they have generated, okay, how they made this kind of factor. Okay, the first question what we have done here is x square minus 1. So यहाँ पे x square minus 1 में what is the value of x which satisfies this polynomial? So what do you think? What is the value of x we can put here so that this polynomial becomes 0? Satisfying means 0 हो जाना है. So if I take x equal to 1, so 1 square minus 1, that is 1 minus 1, that is 0, isn't it? So when x is equal to what? 1. And again, if you take when x is equal to minus 1, what happens then? Then minus 1 square minus 1. Minus 1 square is 1, minus 1, that is 0. See, both the values are actually satisfied. एक बार 1 डाले तो भी ये satisfy हुआ, मतलब result 0 आया, and जब minus 1 डाला तब भी ये 0 आया. That means what?
So if you bring this 1 inside, it becomes x minus 1. And if you bring this minus 1 inside, you get x plus 1. So these two are what? Factors now. These two are factors. After bringing inside those particular values, so you get some factors. So how many factors we will have? We will have three factors. Why? Because the power is 2. Sorry, we'll have only two factors because the power is what? 2. Okay? So if you notice this problem, that is x square minus 1, we can write this as x minus 1 and x plus 1. And if I take x cube minus 1, then again I have noticed that x minus 1 ek tha, then again x square plus x plus 1. And now think of if you have x to the power 4 minus 1. So how you can see the pattern? You just notice the pattern how we are writing. So पहले x minus 1 फिक्स है, इसको तो लिखना ही है, इसमें भी लिखे थे इसमें भी लिखेंगे क्योंकि it is always there. X minus 1, this factor is always there. Now the second bracket we are looking for. So वो कैसे लिख पाए? So everything is in plus. You notice this one, everything in is plus, means plus, and this again this one, this is also everything in plus sign. दोनों में ही एक भी negative sign नहीं देखने को मिलेगा. So again I will write this. So x minus 1 that means होना जरूरी है. It is going according to the pattern. X minus 1 is there every time. And the second bracket you notice that the polynomial's power is decreasing. 1 था, next 0 हो गया. मीन्स एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है ना. तो एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1. तो इसलिए बगल में क्या लिखा है? 1. पहले x का पावर क्या था? 1, एंड देन x का पावर क्या आ गया? 0. दिस 1 मीन्स x टू द पावर 0. तो क्या हो गया? पहला क्वेश्चन में हम देख पाए कि पावर जो है डिक्रीज हो रहा है. एंड इफ यू नोटिस द सेकंड प्रॉब्लम, अगेन यहाँ पे पावर क्या है? 2, देन द पावर इज 1, then the last one is what? 1 means x to the power 0. So but the power here in the left hand side is 3. So 3 है तो एक एक पावर उससे कम होना है, मतलब 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे. अब क्या है हमारे पास? पावर कितना है? 4 है. So what we are going to write is x to the power 3 plus x square plus x to the power 1 plus 1. See, हम लोग जो है ये पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे. 3, 2, 1. एक्स का जो पावर है वो कम कर रहे हैं और एवरीथिंग इज इन प्लस साइड. सो इन दिस वे वी कैन राइट a number of formulas like x to the power 5 minus 1. We can factorize it by looking at this pattern. So first thing, x minus 1 तो लिखना ही पड़ेगा अपने को. And next the second bracket will contain, see the power what is there? 5. So you write x to the power 4, then x cube, then x square, then x, then 1. ठीक है. So ये हो गया एक जनरलाइजेशन देख पा रहे हैं हम लोग. स्टार्ट कहाँ से किया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, फिर एक्स क्यूब माइनस 1 से, एंड देन वी आर जनरलाइजिंग. ठीक है. इट्स क्वाइट सिंपल. एंड द प्रीवियस x to the power 4 वाला जो क्वेश्चन है, वी रोट समथिंग लाइक दिस. सो इफ यू से दैट सर ये वो मैच नहीं कर रहा है, बट मैच करेगा बिकॉज सी देर इज x minus 1 there, है ना. x minus 1 is there. Now if you multiply these two, then you get that factor, that is x cube plus x square plus 1 plus x plus 1. So ये कहाँ से आएगा? जब x square plus 1 जो कि ये वाला फैक्टर है और फिर x plus 1 ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे यू गेट दिस सिंगल पॉलिनोमियल. ठीक है. सो वी हैव जनरलाइज समथिंग. नाउ आई विल राइट दिस इन द पावर ऑफ n. सो x to the power n minus 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सो द फर्स्ट थिंग इज कॉमन फॉर एवरी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज x minus 1 तो लिखना ही है. Then what is next? You see the power. पावर हम क्या लिखे? अब n लिखे. तो पावर हमको करना क्या है? कम करना है. एक पावर को शॉर्ट कर देंगे, गिरा देंगे. सो द पावर इज नाउ n से एक हटा दो, -1. नेक्स्ट वाला क्या होगा? n से 2 हटा दो, n से 3 हटा दो. इन दिस वे यू reduce the power
and then you reach x square, then x, then 1. So this whole thing is now we have generalized. Slowly हम build up किए एक formula को, isn't it? So interesting लग रहा होगा कि जैसे हम स्टार्टअप किए x to the power 2 minus 1 से, फिर x cube minus 1 से, फिर x 4 minus 1 से, then x 5 minus 1, and then ये पावर जो 4 5 ऐसे करके ग्रो कर रहा था, I changed it to some arbitrary n. So अब ये कोई भी n रहे, we can use this identity, we can look this identity and we can write the answer very easily, isn't it? So now the thing is we have generalized this, but we need to prove, we need to have a proof for this. Why we can write like this? Because see, maths proofs ke bina we cannot say anything is correct or wrong. So let us see how to prove this. Okay, so I'll take the right hand part as because the right hand part काफी बड़ा है. So look this. नाउ डू वन थिंग, ये जो x है पहला में, ये हर किसी के साथ आप मल्टीप्लाई करा के देखो, ठीक है. व्हाट आई एम सेइंग इज ये जो पहला ब्रैकेट में x है, इसको पहले हर नंबर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करो. देन व्हाट यू आर गेटिंग, जस्ट सी. सो मल्टीप्लाई दिस x with the whole x to the power n minus 1, x to the power n minus 2. in this way ये जा रहा था x square plus x plus 1 तक गया. एंड देन सेकेंड नंबर क्या है, माइनस 1. ये माइनस 1 अब फिर वापस सबके साथ मल्टीप्लाई हो. सो आई टेक अगेन x minus 1, x to the power n minus 2. in this way ये जा रहा है x square plus x plus 1 तक. सो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन था, कुछ टिपिकल नहीं है. पहले x के साथ सेकेंड ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस 1 के साथ इस पूरा को हम मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना. आई होप यू आर गेटिंग दिस. सो नाउ डू द मल्टीप्लिकेशन एंड सी व्हाट यू आर गेटिंग. तो x पहले इसके साथ होगा ना, सो यू गेट ओनली x टू द पावर n, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या है 1. तो जब बेस सेम है पावर ऐड होगा एक्सपोनेंट्स. ओके अगेन, सो पावर प्लस 1 माइनस 1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड देन इफ यू टेक द सेकेंड टर्म यू सी दैट x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस 2 और यहाँ पे क्या है 1. एंड देन इन दिस वे x टू द पावर n माइनस 2, और ये फिर आगे बढ़ेगा और लास्ट में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, बिकॉज लास्ट में x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा यू गेट x. दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट. नाउ इफ यू गो टू द सेकेंड पार्ट, इफ यू मल्टीप्लाई दिस -1 विथ एवरीवन, तो सबका साइन जो है चेंज हो जाएगा, बट बाद बाकी everything will be same, just sign is going to be changing here. So I'll write x to the power n minus 2. देख रहे हो सब जगह मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट साइन चेंज कर देने वाला. एवरीथिंग इज इन प्लस ना, आई राइट एवरीथिंग इन माइनस. ये से जा रहा है, देन यू गेट माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1. नाउ यू सी दैट ये कट रहा है, ये टर्म कटेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये और ये भी कटेगा. So in this way every terms in between will be cancelled out. So the only terms are left is x to the power n बच रहा है पहले में जो है, और एकदम लास्ट में you notice that -1 बच रहा है. So see we arrived at the left hand part. Left hand part जो कि हमको बोला है x to the power n minus 1 can be written as like this. So yes, we can see that it can be written as this. ये एक सिंपल सा प्रूफ है, कोई बहुत रिगरस प्रूफ नहीं है, एक स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन के थ्रू से हम इसको प्रूव कर पाए, ठीक है. नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई विल ऐड टू दिस इज a टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर प्राइम होगा सो a then a must be equal to 2. सो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सोचने वाली बात है कि अगर ये लेफ्ट हैंड पार्ट जो हम बात कर रहे हैं x टू द पावर n माइनस 1, ये अगर एक प्राइम होता, प्राइम मतलब सबको पता होगा व्हाट इज प्राइम टू अस. प्राइम मीन्स विच हैज only factors, that is itself and 1.
सो ऐसा कोई नंबर जिसका फैक्टर्स वो खुद और वन, लाइक आई टेक 7, 3, 5, 11. सो इन सभी नंबर्स का क्या है, टू, टू इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. ठीक है, इसे टू इज द स्मॉलेस्ट even prime number, not only prime, it is the even prime number, the only even prime number in number system. टू के अलावा और कोई भी even नहीं है. सो वाई दीज नंबर्स आर प्राइम, बिकॉज 7 किसी और के टेबल में नहीं आता है, और 7 को अगर ब्रेक करोगे भी तो 7 1 जा 7 होता है. सो देर इज ओनली 7 एंड 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर 7. 3 भी लोगे, 3 का भी 3 1 जा 3 होता है ना. सो दीज आर व्हाट प्राइम नंबर. नाउ इफ यू टेक 4, इज इट प्राइम नंबर? नो, बिकॉज 2 इंटू 2. तो इसका फैक्टर्स कौन है? दो, 1 नहीं है, 2 है और फिर 2 है. दैट मीन्स दे आर कॉल्ड अ स्पेशल अगेन, they are called composite numbers. So there are number system is divided into two parts. One is prime numbers and other is composite numbers. And the prime numbers are very interesting because even higher studies में उसके बारे में अभी research काफ़ी advanced level में चल रहा है. Prime numbers are the special numbers in higher mathematics. Even number theory जो कि एक well known branch of mathematics है, उसमें भी prime numbers को लेके काफ़ी research चल रहा है. ठीक. So let us go back to the problem and see prime number क्या है, समझ आ गया. So this is x to the power n minus 1 is prime, it is given. So I'll take the formula because just now we have learned the formula that इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, isn't it? अभी अभी हम लोग चेकआउट किए. We can write in this form because we have generalized the formula now. Now the question is, if you look at this, that this is prime. They are claiming, they are giving us that this is prime. So it has two factors now. Okay. So I'm saying that this or this, at least one of them should be 1. One of them should be 1. So my choice of taking, I'll take this as 1. Why I'll take this as 1 and why I'll keep this one as prime, you will come to know in a while. See, if you notice that ये जो part है, this is 1 already, और उसके साथ some terms are adding. So अगर 1 के साथ कुछ जोड़ दोगे तो वो 1 कैसे हो सकता है? It is more than 1, है ना. So this is what it says that ये part तो prime नहीं हो सकता, मतलब 1 नहीं हो सकता. This whole bracket cannot be 1. Why? Because it is more than. And now you can see that a का वैल्यू कुछ ऐसा हो so that उससे कुछ 1 subtract करें, so then yes it can be 1, because subtract करा के हम देख सकते कुछ भी. बट यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, 1 के साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करना पड़ेगा मतलब it will grow, it will become more than 1. So if I take that our assumption that a minus 1 is equal to 1, we claim this because this part cannot be equal to 1, as you can see that it is more than 1. Some terms are going to add with 1, so it's definitely more than 1. So now ये 1 को बाहर ले जाओगे इधर, so 1 plus 1 and a is equal to what? 2. So this is a simple way of looking at this problem, that if this this part is 1 plus something, मतलब ये whole thing is actually more than 1, and this part, this is actually a minus 1, so it can be assumed as 1 because कोई number होता है यहाँ पे, उससे subtract होता है 1, so maybe we'll get 1. And as they are claiming, they are given us in the statement that if this is prime, so one of them must have to be 1 and other one should be the other prime. Like if I take 3, so 3 means what? 1 into 3.
सो एक नंबर को 1 डेफिनेटली होना पड़ेगा और दूसरा नंबर को 3 इटसेल्फ, ठीक है। सो तो पहला वाला जो ब्रैकेट में a माइनस वन था, आई हैव टेकन दिस एज इक्वल टू 1 एंड फ्रॉम दैट वी हैव रीच्ड दैट a इज 2. So when a to the power n minus 1 is equal to prime, then a equal to 2. So this is how we look at this special problem, that is x to the power n minus 1. So we have started, हम start किए थे a square minus 1 से, मतलब x square minus 1 से, and then x cube minus 1 गए, फिर x to the power 4 minus 1 गए, फिर 5 minus 1 गए, and finally we formalized, we arrived by looking at one pattern कि कैसे वो ग्रो कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर टर्म्स कैसे एक्सपैंड हो रहे हैं, एंड देन we have proved as well that why we are writing x to the power n minus 1. Is it okay to write or not? So we have given a simple proof by the help of multiplication of polynomials, and then we have shown that this is a unique property, that if this part is prime then a must be equal to 2. So I hope you enjoyed and you have learned something interesting in this factorization. So maybe this is not the way you're looking at your school. The problems have been solved. So, but I wish that you all learn like this, okay? और काफ़ी कुछ आगे करो, रिसर्च में जाओ, मैथ्स का बहुत कुछ काम करो, डरो मत इस सब्जेक्ट से, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक। सो आई होप you all enjoyed and see you in the next video, and please subscribe to the channel and share it with your friends and colleagues so that they will have fun with maths. Thank you so much.